PLSQL અંદર આપણે આજે આગળ વધીએ અને આપણે એક ક્વેશ્ચન જોવાના છીએ. રાઇટ અ PLSQL block to enter student information like roll name, cursor, S1, S2, S3 and print total result and percentage. તો એ તો આપણે પ્રોગ્રામ જ્યારે બધા કરશું ત્યારે હું તમને બતાવીશ. તો આપણે યુનિટ 1ની અંદર આગળ વધીએ અને આપણે આવી જઈએ સીધા કર્સર ઉપર. કર્સર શું છે? કર્સર છે તે શું છે? ડીલ વિથ DBMS then required કર્સર. જ્યારે આપણે DBMS આરે કોઈ પણ ડેટાબેઝ આરે આપણે ડેટાની આપ-લે કરવાની હોય ત્યારે આપણે કર્સરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટેમ્પરરી ટેબલ છે, સ્ટોર ડેટા ઇન મેમરી, અને તે સ્ટોર ડેટાના મેમરીની અંદર સ્ટોર કરે છે અને આપણું ટેમ્પરરી ટેબલ છે કર્સર. અને આ છે તે ઇમ્પ્લિસિટ છે. કર્સર છે તે ઓટોમેટિકલી રન થાય છે, આપણે તેને એક્સપ્લિસિટ રીતે રન કરવાની જરૂર નથી. SQLની અંદર હું જ્યારે અંડરસ્કોર કરી ત્યારથી જ કર્સર શરૂ થઈ ગયેલું ગણાશે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ EMP આ બે ક્વેરી લખેલી છે. એની પહેલાં કર્સર એક્ઝિસ્ટ નહોતું કરતું, એની પછી પણ કર્સર એક્ઝિસ્ટ નહીં કરે. અત્યારે જ્યારે મેં ઇન્સ્ટન્ટ ક્વેરી લખી છે ત્યારે જ તે કર્સર છે તે એક્ઝિસ્ટ કરશે અને તેમાં લાઈફ વિથ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કર્સર, અને આની અંદર લાઈફ વિથ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કર્સર જ્યારે આપણે આ લખીએ છીએ ત્યારે જ તે કર્સરની લાઈફ છે તે બનશે અને એ પછી એનું કામ પતાવ્યા પછી તે આપોઆપ ડેડ થઈ જશે, એટલે કે તે મેમરીમાંથી જગ્યા પૂરી કરી નાખશે એનું કામ પતાવી. આ જે ક્વેરી મેં લખેલી છે તે પહેલાં બફરમાં સ્ટોર થશે અને બફરમાં સ્ટોર થઈ ગયેલા પછી તે બફર છે તે ડેટાબેઝમાંથી તેનો રિસ્પોન્સ લાવશે અને પછી યુઝરને તે શો કરશે ડેટા. સિલેક્ટ EDEM ઇન્ટુ VEDEM ફ્રોમ EMP વેર EMP નંબર ઇક્વલ 7900. જ્યારે હું સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ EMP કરતો હતો આપણે SQLની અંદર ત્યારે પ્રોસેસ કાંઈ નહોતી થતી. પ્રોસેસ તો આની જેમ જ થતી હતી. આ કેમ લખેલું છે સિલેક્ટ EDEM ઇન્ટુ કરીને VEDEM. PLSQL છે તે વેરિયેબલ બનાવતો હતો અને પછી તે ડેટાબેઝમાંથી ડેટાને લાવતો હતો કે જેનો EMP નંબર 7900 હોય અથવા તો આપણે જો કાંઈ આવી વેર ક્લોઝ ન દીધું હોય તો તે બધા ડેટા લાવીને દેતો હતો. પણ તે કેવા સમયે કે જ્યારે આપણે એને ન દીધું હોય તો પણ તે કામ તો એ રીતે જ તે ફેચ કરવાનું કરતો તો આપણે JDBC જાવાની અંદર કનેક્ટિવિટી જોઈએ, એમાં પણ PHPની અંદર ગમે ત્યારે જોઈએ ત્યારે આ રીતે સેમ વર્ક થતું હોય છે કર્સરને રિલેટેડ. કર્સર તો હોય જ છે. કર્સર છે તે બે ટાઈપના પણ છે. એક છે ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર એટલે કે જે ઓટોમેટિકલી કોલ થાય છે, અને એક એક્સપ્લિસિટ કર્સર કે જે આપણે કોલ કરીએ છીએ. પણ કર્સરની અંદર એટ વન ટાઈમ ઓનલી કેન શો વન ડેટા, પણ આપણને તેની સ્પીડ ફેચ કરવાની ફાસ્ટ હોય છે એટલે આપણને લાગે છે કે કર્સરે એકારે બધા જ ડેટાને શો કરી દીધા એક જ સાથે, પણ એવું નથી હોતું. તે 1 by 1 જ તે કરે છે, પણ તેની સ્પીડ વધુ હોવાને લીધે આપણને એવું લાગે છે. હવે આપણે જોવાનું છે જેસન. તો હવે હું સીધો હું અહીંયા આવી જાઉં છું ત્યાં જીટી કરવા અને અહીંયા હું એને કહીશ વોટ ઇઝ જેસન, પ્લીઝ એક્સપ્લેન. જેસન શું છે? તો ત્યાં જેસન સ્ટેન્ડ ફોર જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ નોટેશન. જાવાસ્ક્રિપ્ટનો એક ઓબ્જેક્ટ નોટેશન છે. ઇટ ઇઝ અ લાઇટ વેઇટ ડેટા ફોર્મેટ. લાઇટ વેઇટ ડેટા ફોર્મેટ છે યુઝ ટુ સ્ટોર એન્ડ exchange data between a client browser app and a server. Why JSON is used? Easy to read and write for humans. Easy to parse and generate for machines. Work with almost all programming languages.
very popular in web APIs, mobile apps, and databases. JSON looks like this. Object name Darshan, age 20, course BCA, student true. Data written in key value pairs. Key are always in double quote. JSON data types. JSON supports only this type. Example, string name Darshan, number, age 20, boolean active, true. Array skills PHP, SQL, HTML. Object address city Rajkot, null. Middle name null. JSON array. Array example, Deb Abid, age 21, Deb Rahul, age 22. Where JSON is used. Explain API response, REST API, fetching data using AJAX, fetch, mobile apps, Android, iOS, configuration files, database like MongoDB, JSON versus JavaScript object. JSON JavaScript object. Data format keys must be in quotes. No function allows. Data format programming object. Keys must be in quotes optional. No function allows. Function allows. આ છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ વર્સિસ JSON નો ડિફરન્સ. સોરી. JSON in PHP simple example $data equal deb darshan age 20. આ મેં પૂરું કર્યું. ઇકો JSON encode $data. JSON encode $data. JSON deb darshan age 20. JSON in JavaScript let JSON data equal deb darshan age 20. Let object equal JSON.parse JSON data console.log obj.deb. In short, JSON is a universal data language for data sharing. If you want, I can explain JSON in PHP. એ આપણે કાંઈ જરૂર નથી અત્યારે. હવે આપણે જોઈએ તો જાવા બિંગ. જાવા બિંગ શું છે? આવી માહિતી તમે ભેગી કરશો તો તમને બહુ જ ફાયદો થશે. મારો તો એક્સપિરિયન્સ બોલે છે. તમારે પણ માનવું જોઈએ, કારણ કે એક્સપિરિયન્સ પર્સન પાસેથી તમે જ્યારે નોલેજ લેતા હોય ત્યારે તમારે પણ તમારું જે સ્ટેજ છે તેને અપ કરવાનું હોય છે. જાવા બિંગ એ શું છે? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सिंपल वर्ड में जावा क्या है? जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, पर मुझे ये नहीं जानना है व्हाट इज जावा बिंग. मुझे ये जानना है. जावा बिंग कोई ऑफिशियल या स्टैंडर्ड टर्म नहीं है. प्रोग्रामिंग में जावा बिंग नेम की कोई लैंग्वेज फीचर या टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट नहीं करती. कन्फ्यूज टाइप होता है. कॉमन पॉसिबल ये हो सकती है. जावा बिन मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन. लोग अक्सर जावा बिंग बोल देते हैं पर मतलब होता है जावा बिन. यस, जावा बिन क्या होता है? जावा बिन क्या होता है? ये एक सिंपल जावा क्लास होती है जिसमें प्राइवेट वेरिएबल्स, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास स्टूडेंट बिन, प्राइवेट स्ट्रिंग डेब, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेब, रिटर्न डेब, पब्लिक वॉइड सेट डेब, स्ट्रिंग डेब, दिस डॉट डेब इक्वल डेब. जावा प्लस बिग, माइक्रोसॉफ्ट बिग एपीआई. कभी कभी लोग जावा में बिग एपीआई यूज़ करते करना को कैजुअली जावा बिग बोल देते हैं.
यस, जावा बीन। परफेक्ट। जावा बीन को इजी वे में समझाते हैं। जावा बीन क्या होता है? जावा बीन एक सिंपल जावा क्लास होती है जो डेटा स्टोर एंड ट्रांसफर करने के काम आती है। मोस्टली यूज होता है जेएसपी, सर्वलेट, एमवीसी प्रोजेक्ट्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जावा बीन के रूल एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। जावा बीन बना के लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्लास पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक क्लास। स्टूडेंट बीन वेरिएबल प्राइवेट होने चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स, पब्लिक void string get name, return name, public void set name, string name, this not name equal name, default no argument constructor, public student bin no argument constructor, कंप्लीट जावा बीन एग्जाम्पल। ये हमने देख लिया है। जावा बीन का यूज़ कहाँ होता है? जेएसपी में डेटा शो करने के लिए, फॉर्म डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस से डेटा कैरी करने के लिए, एमवीसी आर्किटेक्चर में मॉडल पार्ट के लिए। जेएसपी में जावा बीन का सिंपल यूज। जेएसपी यूज बीन आईडी इक्वल एस क्लास नेम स्टूडेंट बीन। जेएसपी सेट प्रायोरिटी नेम इक्वल एस प्रॉपर्टी इक्वल नेम वैल्यू इक्वल दर्शन। जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल एस प्रॉपर्टी इक्वल नेम। शॉर्ट एग्जाम्पल आंसर याद रखने के लिए, जावा बीन एक रीयूजेबल जावा क्लास होती है जो प्राइवेट वेरिएबल्स, पब्लिक गेटर, सेटर मेथड्स और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉलो करती है। अगला क्या है हमारे पास? जेक्वेरी, एक्सएमएल एंड एजेक्स। इन तीनों को हम साथ में समझेंगे। जेक्वेरी, एजेक्स एंड जेक्वेरी, एजेक्स एंड देख लेते हैं एक्सएमएल। सॉरी, एंड एक्सएमएल। चलो, jQuery एक्सेस और इजी इंग्लिश एक्सप्लेन। jQuery एजेक्स क्या होती है? एजेक्स का फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका मतलब पेज रीलोड किए बिना सर्वर से डेटा सेंड रिसीव कर सकते हो। jQuery एजेक्स से PHP, जावा, ASP.NET सर्वर से बात होती है। डेटा XML, JSON, HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में आ सकता है। XML क्या होता है? XML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल XML स्टूडेंट नेम दर्शन, कोर्स BCA, स्टूडेंट पुरु, स्टूडेंट जय, नेम जय, कोर्स BCA, स्टूडेंट पुरु और स्टूडेंट्स पुरु। jQuery एजेक्स का बेसिक सिंटैक्स $.ajax, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर URL data.xml, फिर टाइप उसका गेट रहेगा, सक्सेस फंक्शन रिस्पॉन्स, इसके अंदर रिस्पॉन्स आता है। डेटा मिल गया तो इसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। jQuery एजेक्स से XML कैसे रीड करें? data.xml स्टूडेंट नेम जय BSc स्टूडेंट्स, HTML बटन ID इक्वल लोड डेटा बटन पुरु, div ID इक्वल रिजल्ट इसमें शो होगा।
स्क्रिप्ट src https://code.jquery.com jquery_3.0.bin.jx स्क्रिप्ट jQuery ajax plus xml डॉलर हैशटैग लोड, ये जो लोड वाला हमारा आईडी है बटन वो डॉट क्लिक फंक्शन जब रन होगा तब $.ajax चलेगा। यूआरएल के अंदर डेटा डॉट एक्सएमएल फाइल होगी, टाइप उसका गेट रहेगा, डेटा टाइप एक्सएमएल रहेगी। सक्सेस के अंदर फंक्शन के अंदर हमको एक्सएमएल मिलेगा। $xml.findStudent डॉट ईच फंक्शन के अंदर हमको एक लेट नेम इक्वल $this.findName जो हमारा यहाँ पे हमने नेम लिया था वो, और फिर हमको क्या करना है, कोर्स, तो लेट कोर्स इक्वल $this.find_course.text, इन दोनों को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड करके $रिजल्ट में हमको क्या शो करवाना है, $रिजल्ट जो हमारा ये हमारा ड्यू बनाया है वो डॉट अपेड पी टैग, उसके अंदर डेब, उसके अंदर डेब और कोर्स, उसके अंदर कोर्स को हमको प्रिंट करवाना है सिंपली। $xml जो हमारा रिस्पॉन्स आया था उसमें से हमने फाइंड किया, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। डॉट ईच लूप लगाकर हमने स्टूडेंट के अंदर जो नेम और कोर्स नाम के जो टैग थे उसको हमने ओपन किया, उसके अंदर फाइंड किया नेम और कर्सर, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। दिस मतलब इस जो क्वेरी का पार्ट है वो, और ये इस तरीके से ये पूरा हो गया है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए। एजेक्स इक्वल पेज रीलोड नहीं होता। XML इक्वल डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट, डेटा टाइप XML डेटा हैंडल करता है। डॉट फाइंड XML टैग सर्च करता है। ये डॉट फाइंड जो मेथड है वो हमारा XML डेटा है उसको शोध करता है, उसको शोधता है। डॉट टेक्स्ट टैग का डेटा निकालता है। डॉट टेक्स्ट से हमारा डेटा है वो जो XML के अंदर होगा वो निकल के आता है बाहर।